All Nagaland College Students Union say the post-matric scholarship for the ST students will be released by November 12 as per the Department of Higher Education, Nagaland. Nagaland Chief Minister Nltv highlighted unity, protection of indigenous rights and responsible governance at the Golden Jubilee of Timanya Union Dimapur. Jammu District Administration has set up a district-level monitoring committee and sub-divisional enforcement committees for the Chatti River to stop illegal mining and protect the environment. In Gonda, Uttar Pradesh, 35 years old Sanjay Sonkar died under serious circumstances while in RPF custody. Hello and welcome to Nltv English Primetime. This is Chanchan Kasar and now the news in detail. Hundreds from Jakhama gathered at Vehozano Zhao's home and later at North police stations demanding truth and accountability after her alleged killer Samuel Zhao confessed. Police assured a true investigation while the accused is held at undisclosed locations for security. zo ha go request so ba mo on he jo e ha jo khamin ni mo ha za mi ni mo mi bo na be bo le ba chone za ba ge po ze bo te ke yo bo zla ha go po she mo ha social media lo ne bo zo mo ne bo she ga le bo zla ki sa go ha go ka no mo ta re le bo zi po nya re bo ba ha go me ngo yo不行呀，你不来，你不好，有些对不他的，不行，不是不人家，那最后，我不得个那个双倍的。The All Nagaland College Students Union said the post-matric scholarship for the ST students will be released by November 12 as per the Department of Higher Education Nagaland. ANSU asked all colleges to avoid protests and follow the 2017 Union Assembly's resolution seriously. They warned that if the scholarships are not released on time, the union will organize a democratic protest and hold responsible authorities accountable for delays. Dao Sindhan, along with ABAM and our organizations, honored Nagaland Chief Secretary Sendi Yangar Imchen IAS at his official residence in Kohima on 5th of November. Imchen thanked the community, stressing unity, hard work and collective progress. Rural Development Minister Matsubo Jamir urged the our community to walk the talk and uphold integrity for societal betterment. They even included speeches from our leaders, a special blessing by Reverend Temsu Jamir and a vote of thanks by Mercenin Imsong. Kekri Koto and Tafma will hold the Nagaland World Folk Music Festival on November 6 to 7 at Kuzama Village, Kohima, featuring partners from Thailand and France. The festival launched in 2018 showcases Naga folk music and fusion performances, highlighting the region's culture on a global stage. Former Nagaland Finance Minister K. Thiri urged the Nagaland Legislative Assembly to pass the resolutions for the immediate implementations of the Naga political solution, saying peace should come before religion, politics, factions or tribal division. Thiri questions delays over issues like the Naga flag and constitution, criticized CM Nltv for seeking new negotiations and noted the stalemate is now between the government of India and Nagaland government, not with Naga group who continues to honor agreements. He called for action, saying it's time to move beyond promises and implement the long-pending framework agreement for peace. Nagaland's Matung Yantan inaugurated a new rural hut at K Station in Zemenian district, a project funded by NABARD Dimapur and implemented by Windfall Welfare Society. The market aims to provide local vegetable vendors a safe and organized space, replacing roadside sales. Yantan said the hut will boost rural livelihood, promote agribusiness and encourage cleaner trade practices. He also appreciated NABARD and the implementing agency for supporting farmers' welfare and rural development.
Nagaland Chief Minister Nltv highlighted unity, protection of indigenous rights and responsible governance at the Golden Jubilee of the Tsimane Union Dimapur. He praised TAP for the 50 years of promoting peace and tribal harmony. Rio clarified that non-Naga tribes, which are Kuki, Kachari, Garo, Mikir, are scheduled tribes only if settled in Nagaland before 1963, and the ongoing register of indigenous inhabitants enumeration is paused by the court order. Recruitment for this tribe will resume after the court decision. He emphasized safeguarding indigenous people through a strengthened inner line permit system, including Rio also urged reconciliation and unity among Nagas to ensure peace, progress, and heritage protections. The event was attended by tribal leaders and politicians from Nagaland and Manipur. Advisor for IPR and Soil and Water Conservation Imkong L. Imchen visited Chungtia Aliba village and Sapangya compound on 5th of November ahead of the AO Kakitsir Mungdang General Conference scheduled in Chungtia from 12 to 15 January 2026. He assured full support for the conference and expressed gratitude to CM Dr. Nltv for allocating funds from the other road fund for road repairs. Imchen urged villagers to cooperate for timely completions of work and also visited the landslide hit area in Chungtia affected over 20 houses. Northern Angami Youth Organization held its 2025-27 meeting at Krozo Park, TC Basa, Kohima District. Chief Conservation of Forest Dr. Kenny Loti Miachio from Department of Forest and Climate Change, Chhattisgarh spoke on youth engagements in environmental protections and community development. Leaders from Northern Angami Students Association, Angami Youth Organization and Northern Angami Youth Organizations shared their views. The Chimukidama District Administration has set up a district-level monitoring committee and sub-divisional enforcement committees for the Chatti River to stop illegal mining and protect the environment. Heavy machinery's use is banned without proper license under Nagaland mining law. Violators face arrest, fine and seizure of equipment. The committees, including officials from police, forest, mining, water and local group, will inspect, prevent illegal mining, raise awareness and ensure compliance. The administration urges villagers and civil groups to cooperate for sustainable river resource management. A flower exhibition and floriculture workshop was held on 4th November at TE Town Hall, Waka, organized by Wersenro Okro. Special guest Jimbemo Audio highlighted floriculture as a source of income for women and rural communities. Technical sessions covered sustainable cultivation and commercialization, and in on-spot flower competitions engaged participants. In a major anti-narcotics operation, Tripura police arrested 3 drug smugglers, including a BSF Jawan from Udaipur railway station in Gomati district. They accused Salim Uddin of the BSF 100 Battalion along with Sachibul Islam and Farik Akhtar from Assam were caught smuggling 128 grams of brown sugar via train during a night raid by Udaipur GRP and Radhakrishopur police. The arrests have sparked concerns among citizens over the growing drug menace despite government warnings. All 3 will be produced in court for police remand and further interrogations. आज शाम को हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि रेलवे स्टेशन पे कुछ लोग इलीगल ब्राउन शुगर और इलीगल कॉन्ट्राबैंड कुछ लेके आएंगे। तो इस इन्फॉर्मेशन के चलते हमने और जीआरपी रेलवे पुलिस ने मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन किया था। उसमें हमने 3 लोगों को पकड़ा है। 3 लोगों के नाम है, एक का नाम है सजीमुल इस्लाम, एक का नाम है फरीद अख्तर और एक का नाम है सलीमुद्दीन। ये तीनों को पकड़ा है हमने और उनके पोजीशन में हमें 10 केस मिले हैं जो अभी सस्पेक्टेड टू बी ब्राउन शुगर। तो इसका टोटल वेट हमें मिला है 128 ग्राम्स, ये टोटल वेट मिला है। और ये तीनों जो है ये आसाम के रहने वाले हैं और इसमें से सलीमुद्दीन जो है वो बीएसएफ का एक सफाई कर्मचारी, एक ट्रेड्समैन है, बीएसएफ का एक वर्कर है।
तो इन तीनों को आज हमने इस केस में ये किया है, डिटेन किया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन हम अभी सर केस नंबर भी केस अभी रजिस्टर होगा। अभी ये सीज हुआ है मटेरियल, तो अभी केस भी रजिस्टर होगा और फिर इन्वेस्टिगेशन। सर एक बात आपने बोला था, जो सामान आपने यहाँ पर पकड़ा है वो सस्पेक्ट है क्या? अभी भी कोई नेशन है सामान हीरो नहीं है क्या? नहीं, ये एफएसएल का एक रिपोर्ट आता है, उसमें फाइनल एफएसएल का एक्सपर्ट ओपिनियन आता है, तो उसके बाद हम बोलेंगे कि ये हीरोइन है। बट ये सस्पेक्टेड टू बी हीरोइन, ऐसे ही हम लोग মার্কেট পেলো কিনা না না আপনাকে বেঁধে রাখলো কেন? হ্যাঁ বেঁধে রেখেছে আপনাকে? আমি তারা ভাবে আমি বলি বাকি দিব বলে কে ভাবে? ওরা কয় ওরা কারা? কে ওরা কারা? পুলিশ? হ্যাঁ আপনাকে বেঁধে রেখেছে? আমার কয় আমি তুমি বাকি দিবি বলে। আমি কেন বাকি? আপনি কি করেন এমনিতে? হ্যাঁ এমনিতে কি করেন আপনি? আমি কিছু না, আমি তো At Akashvani Imphal's Diamond Jubilee, Governor Jakhama urged journalists to uphold truth, ethics and responsibility, calling the pen and microphone powerful tools that must be used wisely. He praised the radio station for 60 years of serving, promoting unity, cultural and local language outreach, and lauded its digital initiative and national awards. The event featured the release of a souvenir and cultural performances by Padma Shri, Guru Rubin, Mashangva and folk singer Manga Mayang Lamba. Media must act as a bridge that connects communities, not as a wedge that divides them. When reporting on sensitive issues, restraint and balance are as important as courage. The really important is the tone of public discourse. Debates on television or digital platforms should inform and enlighten, not descend into personal attacks or hostility. True strength lies in reasoned discussion and respect for differing views. Criticism of government policies is welcome in a democracy, but incitement, glorification of violence, or communal provocation must find no space in responsible journalism. Media must act as a bridge that connects communities. Manipur has banned pork sales, pig shops and pig transport in Kakching district after a suspected African swine fever outbreak. Authorities are investigating cases in Kakching, Pibong, Ungsang, Kumbi and Moirang Kano. Farmers reportedly sold infected pigs and meat disposal has caused river contaminations. Officials urge strict biosecurity and no ASF vaccine exists and recommended postmortems on dead pigs. Union Minister George Kurian received an enthusiastic response while campaigning for BJP candidate Lalmin Tanga at a public meeting in Durlung. Kurian highlighted PM Modi's development initiative for Mizoram and the Northeast, stressing that a BJP win would strengthen the Dampa daily connections and boost infrastructure, connectivity and inclusive growth in the state. BJP State Vice President BJP Vice President other leaders, sisters and brothers. I am very happy that this is a beautiful place and very peaceful and without any pollution. I congratulate you people for staying here. Ikutang mo itak may kalombo kaya ito ram peaceful ram buang le nuam taka ilaw kaya nga tumi karon mo kaya techo kalom leni. I came here for requesting to you to elect Mr. Lalmin Tanga, candidate of BJP. Kaya hiyan kalong kalsan so kang candidate zom taklang ni thanga kaya law min von vote pui ve turin karon ngen pui tur chuin karo kalani. Because I came here through the roads, I found that no road is there, not developed, and see other places and other states, the development you see. If you elect, see Lalmin Thanga, definitely this place we have seen that they have
Narendra Modi ji connected this railway to Delhi and by air to Delhi and the roads to this Mizoram from Delhi. That is the same way this damper also will be connected to Delhi. Tura Maternity and Child Hospital in Meghalaya will inaugurate a new 50-bed wing featuring the state's first public NICU and an upgraded SNCU. Ahead of Christmas, the expansion aims to reduce maternal death and address severe anemia, enhancing healthcare for mothers and children, though through public-private collaborations. In a remarkable show of dedication, Deep Jyoti Das, a young fan of Assamese singer Zubain Garg, ran from Bokaka to Zubain Serwa in Sonapur on Tuesday to express his admiration. Starting at 7 a.m., Deep Jyoti completed the journey by afternoon, highlighting the deep loyalty and love fans across Assam felt for the music icon. His act reflected the strong bond between Zubain Garg and his admirers. বোকাহাট কুৰাবাহী পৰা আহিছোঁ আমাৰ দৌৰটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আপোনাৰ কুৰাবাহী সত্ৰৰ পৰা জুবিন দাক মানে জুবিন দা যেহেতু ন্যায় হোৱা নাই ন ন্যায় ক্ষেত্ৰতে মই আহিছোঁ আৰু পৰিৱেশৰ লগত আহিছোঁ সেই দুটাই মানে ইয়াত দেখি ভালেই লাগিছে যেহেতু জুবিন দাক মোৰ আগত ওচৰৰ পৰা লগ পাবলৈ মন আছিলে তেওঁ ঘৰলৈ দৌৰি যোৱা মোৰ এটা প্ৰগ্ৰেম আছিলে ইমান খন্তেক যে তেওঁ নাইকিয়া হৈ যাব সেইটো আমিতো ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা হৈ যাব বুলি কিন্তু মনত সদায় আহি থাকে জুবিন দাই মানে মনত সদায় আহে যে জুবিন দাই এদিন লগ কৰিব তই দৌৰি যাব লাগিব সেইবিলাক মনলৈ আহি থাকে মোৰ তাৰপিছত ঘটনাটো এনেকৈ হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ কি জুবিন দাৰ যিহেতু ন্যায় দিয়া নাই ন চৰকাৰে মই দৌৰি পেলাই জুবিন দাৰ কাৰণে ন্যায় বিচাৰি পেলাই মই জুবিন দাৰ ক্ষেত্ৰলৈ যাম আমি কালি 8টা বজাত আহিছোঁ দিনত ৰাতিপুৱা তাৰপৰা আজি আপোনাৰ 3টা বজাত পাইছোঁ আৰু কিন্তু দিনে ৰাতিয়ে দৌৰি আহিছোঁ ক'ৰবাতো খোৱা বোৱাটো কৰিবই লাগিব ন বহুত দূৰ হৈ যায় মোৰ দীপজ্যোতি দাস আৰু আপোনাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছেই ন তেওঁ ন্যায় সোনকালে যাতে দিয়ে তেওঁ সেইটোৱে অনুৰোধ মোৰ ফালৰ পৰা দেই সকলো ৰাইজেই কৈ আছে আমাক ন্যায় সোনকালে লাগে ন গৰিমা বৌ কৈ আছে ন্যায় লাগে কথা সেইখিনি আৰু এইটো নাহৰ পুলি লৈ আহিছোঁ জুবিন দা যিহেতু ভাল পায় নাহৰ পুলি আমি যিহেতু পিছবেলা সময় হ'ল ন সেইটো কাৰণে আমি পুলি ৰোৱা নাই আমি ইয়াতে কমিটি আছে মই কমিটিতে চঞ্জাই দিছোঁ তেওঁলোকে ক'ৰবাত ৰুব ভাল জেগাত কাৰণ পুলিটো আমি প্ৰতিপাল কৰিব লাগিব ন মই ইয়াত ৰুই থৈ যাম কাইলৈ মৰি থাকিব ভাল নালাগিব সেইটো কাৰণে য'ত নাহৰ থাকিব ত'ততো জুবিন দা থাকিবই ন সেইটো কাৰণে আমি নাহৰ পুলি ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ এইটো কিন্তু মই লৈ যাম ঘৰৰ মানে ঘৰলৈ বুলি নহয় মই ৰাস্তা যাওঁতে কোনোবা ব্যক্তিক যি পাওঁ এইটো মই তেওঁক ৰুবলৈ মই দিম বুলি ভাবিছোঁ A fatal road accident occurred late at night in Jakhama, Narayanpur when an unidentified vehicle hit two bike riders. Lal Das died on the spot while Navjyoti Das sustained serious injuries and was rushed to a hospital. Both were residents of Sachwa village. Police have launched a probe to trace their vehicle and identify the driver. কি হৈছিলে ইয়াতে গাড়ীটো আপোনাৰ জখৰীয়া তিনিআলিত মানে এক্সিডেণ্ট হোৱা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ তাতে ইয়াতে আমি ৰাস চাব গৈছিলোঁ ৰাস চাব ঘূৰি আহোঁতে এটা দুজন ব্যক্তি দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে পৰি আছে আমি ইয়াতে ৰাস্তাত দেখা পাই আমি কোন আমিতো ধৰিব পৰা নাই এনেই মানে পাব্লিকে কোৱা মতে কেঞ্চুৱা গাঁৱৰ বুলি আমি শুনা পাইছোঁ কেঞ্চুৱা গাঁও শুনা পাইছোঁ কেঞ্চুৱা গাঁৱৰ বুলি কেইজন আছিলে তেখেত দুজন আছিলে কি লৈ আহিছিলে তেখেতে বাইক লৈ আহিছিলে কিন্তু কি গাড়ীয়ে মাৰিছে বা কি গাড়ীয়ে খুন্দা মাৰিছে আমিতো প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই আমি 108ত ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰাৰ পিছত 108 আমি সঠিক সময়ত আমি নাপালোঁ তাৰপিছত আমি পুলিচ প্ৰশাসন আহিলে প্ৰাইভেট এম্বুলেঞ্চ আহিলে আহি পেলাই পোৱাৰ পিছত তেখেতক লৈ গৈছে কোৱাচোন কি হৈছিলে In a late-night anti-theft operation, Nazira police arrested 5 cattle thieves from the Pukuri Matika Toller area after a prolonged chase. So far, 18 stolen cows have been recovered. The operation is being conducted jointly by Namti, Shimloguri and Nazira model police stations under Shivasagar district.
Authorities say the search continues to trace other suspects and recover remaining stolen livestock. আজি কিয় ৰাতি আহিছিলে ইয়াত আহি পাওঁতে বোলে ৰাতিপুৱাই হ'ল গোটেই ইয়াৰ পৰা গৰুবোৰ কিনি কিনি লৈ যোৱা কাৰ পৰা কিনি নাম কি ভাগে কি নাম নাজানা ইমান কিমান দিনৰ পৰা কাম কৰি আছা তাত বেছি দিন হোৱা নাই কাম কৰি আছা কিন্তু নাম নাজানা মইনা বুলি জানো কিমান টকাত কিনা বেচা কৰা গৰু কিবা চালান দিয়ে নে কাগজ চাগজ দিয়ে নে দিয়ে একেখনকে দিয়ে নে বাৰে বাৰে বেলেগ বেলেগ দিয়ে বেলেগ বেলেগ দিয়ে গৰুবোৰ ক'ৰবাত ৰাস্তাৰ পৰা উঠাই থা না ক'ৰবাত ইয়াত কিমান লাভ পলাইছে আকৌ পুলিচে কেদিতে যিকেইটা কৰিছিলে সেইকেইটা পলাই দিলে তহঁতি কি কৰ তেন্তে আমি ডেম্পত চুকাটো গম পাৱ নাই আমি শুই আছিলো কেলে পলাইছে বোকা কেলে লাগিলে পলাইছে আমি শুই বা তেনেকে পলাইছো কি গমেই নাপাওঁ চুনুকা কেইটা কেলে পলাইছে তেন্তে চাৰে যেতিয়া ধৰিছে ৰখি দিছো কেইটা আছিল তহঁতি চাৰিটা আছিলে সেইকেইটাক লৈ গ'ল পলালে পলালে লগতে আছিলি তেতিয়া আমাৰ বিচনা তাত বিচনা দোকান আছে মানে বেৰখন ফালি কোন কোন পলালে নাম কি ইয়াৰ পৰা দিনতে লৈ যাওঁ আজি কিয় ৰাতি আহিছিলে ইয়াত আহি পাওঁতে বোলে ৰাতিপুৱাই হ'ল গোটেই ইয়াৰ পৰা গৰুবোৰ কিনি কিনি লৈ যোৱা কাৰ পৰা কিনি নাম কি ভাগে কি নাম নাজানা For the first time in Bihar, the Election Commission has set up mobile keeping desk at the Kane Club polling stations for voters carrying mobile phone. Since mobile are not allowed inside polling booth, voters can safely deposit their phone at their desk before voting. The desks are managed by Election Commission officials to ensure that drivers' devices are securely stored and returned after a voter casts their ballot. पहली बार ही ये व्यवस्था हुआ है और ये व्यवस्था बहुत अच्छा है कि मतदाता अपना टेंशन फ्री होके जाएंगे, मतदान देके आएंगे और मोबाइल यहाँ जमा करेंगे, उनको गुम होने का कोई टेंशन नहीं होगा और टोकन के साथ जाएंगे, टोकन जमा करके अपना मोबाइल ले लेंगे। लोग को तो अच्छा ही लग रहा है, मोबाइल जमा कर रहे हैं, टोकन ले रहे हैं और टोकन ले करके अपना मोबाइल लेके जा रहे हैं। टाइम की बचत हो रही है, टाइम से आ रहे हैं, अपना मोबाइल का काम जिनके पास ज़्यादा है वो अपना काम भी कर रहे हैं, थोड़ा देर साइलेंट करके जा रहे हैं और अपना वोट डाल करके फिर मोबाइल लेके जा रहे हैं। पहली बार ऐसे तो देख रहे हैं, पहली बार जाते थे तो मोबाइल रखने का कोई सुविधा ही नहीं थी और मोबाइल लेके साथ में जाना पड़ता था। इस बार जो है मोबाइल यहाँ रखने का व्यवस्था भी है और मोबाइल भी रखा गया और सुरक्षित मिल भी गया, इससे हमें अच्छा लगा। ठीक है, बढ़िया है, टोकन दिए हो गया। आप आए जरा इसके बारे में बताएं। आए जैसे ही हम मोबाइल पूछा गया है तो बोला मोबाइल जमा कीजिए, मोबाइल जमा किए, टोकन मिल गया। पूरा आएंगे मतदान करके फिर टोकन देंगे, मोबाइल मिल जाएगा, सुविधा अच्छी है। पहली बार At a rally in Araria, Bihar, PM Narendra Modi criticized the RJD Congress alliance, accusing them of promoting jungle raj and trying to give citizenship to infiltrators secretly. He promised to protect national security and remove infiltrators. Modi also connected emotional with voters, saying he came not as the Prime Minister but as your son, your brother and member of your family. He claimed a strong wave of support for NDA was building across Bihar and urged people to vote for the alliance for continuous development, safety and stability, declaring फिर एक बार NDA सरकार। इसमें गुप्त सूचना मिली कि रजला कला में एक महेंद्र प्रसाद हैं यादव, उनके घर में भारी मात्रा में कैश रखा हुआ है जो हटाने वाले हैं और अभी तुरंत कार्रवाई किया जाता है तो बरामद हो सकती है। तो हम लोग एफएस की टीम के साथ रात में छापामारी किए और महेंद्र यादव के घर से 32,42,000 रुपया बरामद हुआ और हम लोग इस पर आगे की अनुसंधान कर रहे हैं कि ये पैसा कहाँ लाया गया है और यह क्या करने वाला। ये महेंद्र यादव जो नाम बता रहे हैं सर, वो क्या करते हैं? ये कुछ कहीं किसान हैं, भजन कीर्तन का काम करते हैं
इनकी जो पत्नी है वो आशा कार्यकर्ता है। तो सर इतना भारी मात्रा में पैसा एक नॉर्मल आदमी के घर में मिला है सर, तो इसमें कैसे क्या जांच हुई और क्या उन्होंने सर बोला है, कहाँ से आया पैसा? ये जब हम लोग छापामारी किए तो ये महेंद्र प्रसाद तो घर में नहीं थे, उनकी पत्नी थी, तो उनके द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्ट नहीं बताया जा रहा था कि यह पैसा कहाँ से लाया गया है। बार बार उनके द्वारा यही बोला जा रहा था कि यह पैसा जो है हम कमा करके एकत्रित किए हैं। सर ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव है तो चुनाव में इस पैसे को यूज करने को लेकर के कहीं जमा किया गया हो या फिर किसी प्रत्याशी के द्वारा रखवाया गया हो? यह तो आगे के अनुसंधान की बात है, लेकिन इस तरह से अभी तक कोई कनेक्शन सामने नहीं है। इसमें गुप्त सूचना मिली कि रगला कला में Jhajjar police conducted a major raid ahead of the Bihar Assembly elections, recovering Rs 32.42 lakh from the home of Mahindra Yadav in Jhajjar constituency. The operation was based on a tip-off confirmed SDPO Rajesh Kumar and was carried out jointly with the FSC team. Mahindra was not at home during the raid while his wife and ASHA worker claimed the money was earned illegally. Police are investigating the source of the cash and whether it has any link to political funding or election activities. देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व। देखिए, हम लोग अभी वोट दे करके निकले हैं। इस लोक आस्था के महापर्व छठ के पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के बाद लोकतंत्र का महापर्व आया है और लोकतंत्र के महापर्व में उसी शुद्धता, पवित्रता, सामाजिक सौहार्द के साथ हर बिहारी को भागीदारी करनी चाहिए। सब लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले और वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर जॉब। में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के अंदर दोनों नेताओं के नेतृत्व में विकास, गरीबों का उत्थान और सबसे बड़ा है जंगल राज बनाम विकास, क्योंकि लालू जी का एजेंडा ही फिर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का। भूरा बाल साफ करो, काहे को भाई? 20 साल में नीतीश कुमार ने इसको खत्म। In the first 2 hours of the phase 1 of the Bihar Assembly elections, 13.13% of 3.75 crore voters cast their ballot. Saharsa recorded the highest early turnout at 15.7%, followed by Barusarai 14.6% and Muzaffarpur 14.38%. Tall leaders including Tejasvi Yadav and Family Union Ministers Giriraj Singh and Lalan Singh, Deputy CM Vijay Kumar Sinha and singer turned out politician Kesari Lal Yadav voted early. Giriraj Singh defended ID cards with burqa-clad women to prevent vote theft, while Tejasvi appealed to the youth to vote for change. Voting for 121 seats will continue till 5 p.m. for 1,214 candidates in the fray. The Indian Navy will commission its indigenous built survey vessel Ikshak at Kochi on November 6 with Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi presiding. The third SVL class ship Ikshak will conduct hydrographic surveys and serve as a hospital and disaster relief ship. It is the first SVL vessel with women-specific accommodations. Built by GRSC Kolkata with 80% indigenous content, the vessel reflects Atmanirbhar Bharat and India's advancing maritime capabilities. Ikshak means the guide, and true to its name, it will survey the deep oceans and uncharted waters to guide all mariners to safe passage. The ship is a shining example of indigenization. It has 80% indigenized content by cost and 100% indigenized steel from sail. You all know the name Ikshak comes from a Sanskrit word. The meaning is the guide. So basically the class of our ship is survey vessel. So the primary job of our ship is doing survey. So doing survey means it is like measuring the depth of the sea and understanding the changes which happens to the seabed.
and do research with respect to the receding sea. We will now take a short break. Stay tuned. We'll be right back. Welcome back, viewers. Let's get back with the news. In Gonda, Uttar Pradesh, 35-year-old man Sanjay Sonkar died under suspicious circumstances while the RPF custody. Sonkar from Kinki village was detained on Tuesday for questioning in a thief case. His family alleged he was tortured with electric shock during interrogations and later taken to Gonda Medical College, where he was declared dead. Relatives also claim RPF left the body in the mortuary without informing them. Therefore, a murder case has been filed against 2 RPF sub-inspectors, a constable and others. Investigation is ongoing. कल दिनांक 4 नवंबर को उसके भाई संजय सोनकर को आरपीएफ पुलिस टीम चोरी के मुकदमे में हिरासत में लेकर गई थी, जिसकी आज संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। परिजनों का आरोप है कि यह घटना आरपीएफ पुलिस टीम द्वारा कारित की गई है। शव की पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम एक पैनल टीम द्वारा करवाया गया और साथ में वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। मृतक के भाई की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर 3 नामजद आरपीएफ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में Samir Ansari was allegedly killed by his wife Ruby, her lover Imran Vagila and 2 relatives who buried the body under the kitchen floor of their home in Sarkanj. The crime branch exhumed his remains nearly a year after his disappearance. Vagili has been arrested while Ruby and 2 others remained absconding, and forensic tests and DNA analysis are underway. गंभीर प्रकार का जो गुनाह था उसका भेद हमें मिला है डिटेक्शन में। उसमें ऐसा जानने में आया है कि एक महिला थी रूबी, उसने अपने पति को अपने दोस्तों के साथ मिलकर लास्ट ईयर मार डाला था और जो उसके बॉडी के पीसेस थे उसको उन्होंने किचन के नीचे खड्डा खोद के नई कंस्ट्रक्शन करके दबा दिया था। इसमें इमरान जो एक मुख्य आरोपी है उसकी पुलिस ने अभी पूछपरछ चालू है और बाकी आरोपियों की अभी तफ्तीश और तलाश चालू पुलिस कर रही है। रूबी के अलावा 3 आरोपियों का भी सामने भूमिका आई है जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो अवशेष हमें मिले हैं, अवशेष की हम फॉरेंसिक जांच करवाएंगे और आगे की इन्वेस्टिगेशन में सभी प्रकार के तकनीकी मदद लेके एक अपनी इसको इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। रूबी और समीर का लगभग आज से जो अभी तक ध्यान पे आया है कि 3 साल पहले शादी हुई थी। उस शादी के दरमियान उनका अंदर झगड़ा भी चलता था, ऐसा भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। इसके बाद लास्ट ईयर वो इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी करके इसमें समीर की हत्या करी थी और उसके साथ जो रूबी के फ्रेंड्स थे उसमें इमरान, फैजू, साहिल वगैरह, इनको मददगारी के साथ इन्होंने मर्डर को अंजाम दिया था। इसमें अभी हड्डियां मिली हैं। अब वो आगे उनका फॉरेंसिक का एनालिसिस और डीएनए रिपोर्ट्स वगैरह जो आएंगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, उसके आधार पे क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने हत्या को किस तरह से अंजाम किया था, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो चुका है और इन्होंने पूरा सीमेंट के अंदर जो बॉडी को दबा रखा था। तो जो Union Minister Kiran Rijiju slammed Rahul Gandhi for leak vote rigging in the Haryana elections, saying it undermines India's democratic institutions and damages the nation's image. He called the remarks a well-planned conspiracy and urged the opposition to focus on constructive politics instead of spreading distrust. In a way, Sri Rahul Gandhi has considered that he cannot work hard, he cannot go to the people, he will come once in a blue moon and wave his hand and then he will vanish again. So he knows he is not made to toil, bite the dust. He is not a person who can live with the people. He can just appear for a time being and he will just go away again. He will disappear. That is why he is in a way considered for a long term
that Congress will not win election and they will keep crying and keep abusing the system itself. So in a way, it's a very defeatist mentality which he is carrying and is blatantly displaying it before the media. दीपक चौबे, हम लोग जब अपोजिशन में थे, कितने साल हम लोग अपोजिशन में थे, उस जमाने में जो ये कोर्ट्स का जो व्यवस्था था उस समय कैसे था? सारे जजेस सरकार अपॉइंट करते थे। आजकल तो कॉलेजियम सिस्टम से जजेस अपॉइंट करते हैं। कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस ही सरकार जज अपॉइंट करते थे। इलेक्शन कमीशन सरकारी अपॉइंट करते थे, सीबीआई डायरेक्टर सारा चीज़ सरकारी अपॉइंट करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, कभी नहीं कहा। हम संघर्ष करते रहे, लगातार संघर्ष करते रहे और हमने जीत प्राप्त किया, लोगों का विश्वास प्राप्त किया है। हमने कभी भी अदालत को गाली नहीं दिया, हमारा पार्टी ने कभी भी इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने लोकतंत्र की व्यवस्था को हमने सवाल नहीं उठाया। अगर कहीं गलती हुई है तो उसके लिए अदालत जाना है तो भी हम लोग जाते थे, पिटीशन देने थे, इलेक्शन कमीशन को देते थे। लेकिन हमने अपने देश का लोकतंत्र को हमने कभी गाली नहीं दिया। ये आदमी विदेश में जाकर के हमारा देश का तंत्र को गाली देते हैं, हमारे देश को गाली देते हैं, अदालत को, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इंस्टीट्यूशन गाली देते हैं। और जब लोगों का बीच में नहीं जाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, तो चुनाव तो हारेगा ही। फिर भी कभी कभी कुछ स्टेट में कांग्रेस पार्टी भी जीते हैं, तो फिर क्यों सवाल नहीं उठाए उस समय? तेलंगाना में कैसे सरकार में आए कांग्रेस, कर्नाटक में, हिमाचल में, पंजाब में आम आदमी कैसे जीते, तमिलनाडु में, केरल में अपोजिशन पार्टी के लोग लगातार कितने बार जीते हैं? हमने कभी सवाल किया है? इन ए वे Sri Rahul Gandhi has considered that he cannot work hard, he cannot go. Captain Pat Cummins is set to return on the second Ashes Test against England today, though he may not play all four remaining matches due to sport turnarounds and workload management. Cummins, sidelined since July with a lower back injury, missed the opener at Perth starting November 21, where Steve Smith led Australia. The 32-year-old bowler ate over without pain in a recent sessions and said the final decision on his return will be made closer to the second test starting December 4 in Brisbane. I'm keen to play as much as I can, but realistically some games with short gaps might be too much, Cummins said. He will remain with the team during the opener, observing for the coach box to gather insight for the upcoming matches. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. declared a state of emergency after Typhoon Kalmagi killed or left missing at least 241 people in Central Province, making it the deadliest disaster in the country this year. The typhoon killed 114 people, mostly from flash flood, and 127 remain missing, especially in Cebu. Over 2 million people were affected and over 560,000 villages were displaced, with nearly 450,000 moved to emergency shelters. US President Donald Trump claimed at a business forum on Miami that India and Pakistan made peace in May after he threatened to cancel trade deals if they continue fighting. He said he warned both countries. Trump also said US tariff helped bring the ceasefire, though India has denied that any third-party mediation, saying it handles issue with Pakistan directly. He added that he played a role in resolving other international conflict, calling it making peace through strength. That all around the world, America is making peace, and we're really making peace through strength because they know they're not going to mess around with us. Nobody's going to mess around with us. You saw what happened. We made a deal with China last week, and we made a deal with Japan last week. We made a deal with Malaysia. They helped us so much. All great economic deals, all great for everybody. In 8 months, I ended 8 wars, including Kosovo and Serbia.
The Congo and Rwanda, that was going on for a long time. Pakistan and India. You know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't want to mention the newspaper because it's usually fake news, but I heard they're going to war. 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down, essentially. And I said, this is war. And they were going at it. And they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. No way, this has nothing to do. I said, it has everything to do. Your nuclear powers. I'm not trading with you. We're not making any deals with you if you're at war with each other. A day later, I get a call. We've made peace. They stopped. I said, thank you, let's trade. Isn't that great? Tariffs did that. You know what? Tariffs. Without tariffs, that would have never happened. Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, and Cambodia and Thailand. All of them were in war, starting war. Some of the wars were 32 years old. One was 38 years old. Amazing. They tried to, President Putin, I spoke to him 2 weeks ago, and he said, on the one, he said, we've been trying to settle that war for 10 years. We weren't able to do it. You got to settle. I got some of these things settled in an hour. No help from the United Nations at all. Then all around the world, America's making peace, and we're really making peace through strength because they know they're not going to mess around with us. Nobody's going to mess around with us. You saw what happened. We made a deal with China. Over 2,000 pilgrims, Indian pilgrims and thousands of locals took part in the 556th birth anniversary celebrations of Baba Guru Nanak Dev Ji on Wednesday in Nankana Sahib, Punjab, Pakistan, about 89 kilometers from Lahore. A holy procession of Palki Sahib, a golden palanque, was carried from Gurudwara Janmashthan to Gurudwara Kiara Sahib to mark the occasion. The Pakistan government had issued 2,150 visas to Indian Sikhs to attend the celebration. US President Donald Trump said America lost a bit of sovereignty after Zoran Mandani won the New York City mayoral elections. Speaking in Miami, he claimed Africans had restored sovereignty by electing him last year, but felt it was slightly lost with Mandani's victory. Trump added that the country now faces a choice between communism and common sense and said Florida would become a safe place for people leaving New York. Today, on the 1-year anniversary of the single most consequential election victory, they say, this is them, this isn't me. I'm a very modest person, I would never say this. The single most consequential election victory in American history. It's possible. I mean, it's possible. We've done a lot. On November 5th, 2024, the American people reclaimed our government. We restored our sovereignty. We lost a little bit of sovereignty last night in New York, but we'll take care of it. Don't worry about it. Gathered today on the 1-year anniversary of the single most consequential election victory, they say, this is them, this isn't me. I'm a very modest person, I would never say this. The single most consequential election victory in American history. It's possible. I mean, it's possible. We've done a lot. On November 5th, 2024, the American people reclaimed our government. We restored our sovereignty. We lost a little bit of sovereignty last night in New York, but we'll take care of it. Don't worry about it. Gathered today on the 1-year anniversary of the single most consequential election victory, they say, this is them. US President Donald Trump announced he will not attend the G20 summit in Johannesburg on November 23 and 22, questioning South Africa's membership in the group of major economic. Trump told the America Business Forum in Miami that South Africans shouldn't even be in the G7 anymore, and said he would not represent the US at the summit, citing concerns over recent developments in the country. Dubai-based travel influencer Anand
has died at 32, though the case is not yet known. His family shared the news on Instagram, asking for privacy and requesting people not to gather near their home. Sood, with 1.4 million Instagram followers and 3.8 lakh YouTube subscribers, was known for travel photos, reel and vlog, and was listed in Forbes India's top 100 digital stars from 2022 to 24. That is all for the Nltv English Primetime. For more news and update, keep watching Nagaland TV.